हाँ यही टाइम होगा सर। हाँ, और बहुत लंबा चलेगा क्योंकि कॉमर्स है, हम्म, आर्ट्स है। जो मैंने सुना मेरा तो 50 दिन मार्च या। 4th 5th से होगा मेरा वाला तो। हाँ, अभी डेट शीट आने वाली है शायद। अभी तो शायद ही है सर। हाँ, आने वाली है। न्यूज़ आना शुरू हो गई है कि द डेट शीट विल बी अनाउंस्ड वेरी वेरी शॉर्टली, मतलब। मेरे ख्याल तो नवंबर एंड के आसपास आएगी। ओके, न्यूज़ आने लग गई है, मतलब कि। सो लेट्स start discussing magnetism. Something very fundamental is there, which we will हम्म, quickly go through about magnetism. इसमें कुछ खास नहीं है शुरू वाले पार्ट के अंदर, बट बेसिक है जो मेरे ख्याल से छोटी क्लास में भी कवर्ड होता है, राइट? सो yes, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट? ओके, सो द बेसिक प्रॉपर्टीज आर, एक तो इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, राइट? हम्म, सो मैग्नेट्स आर केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, लोहे को, निकल को, कोबाल्ट को खींच लेता है। ओके, yes sir। और हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम्म, तू एक हो गया कि इफ यू if you have a bar magnet and you leave it free under the influence of gravity, hang कर दो उसको, it will हम्म, align itself to earth's magnetic field, right? तो हम मैग्नेट का यूज करते हैं नॉर्थ और साउथ ढूंढने के लिए। अगर आप कहीं पर मैग्नेट को छोड़ दो हवा में टांग के, तो वो घूम के अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ भी मैग्नेट होती है, अर्थ के अंदर भी हम्म, मैग्नेट होता है, एक बार मैग्नेट ही होता है पूरा, yes sir। बहुत बड़े साइज का ऑब्वियसली। बार हम्म, मैग्नेट अगर इतना सा टुकड़ा होता है रबड़ की तरह, तो फिर वो वाला बार मैग्नेट तो एक बहुत बड़ी ईंट हो गई जैसे अंदर, हम्म, क्यूबॉइड शेप की, काफी बड़ी। तो वो जो मैग्नेट है, इट विल अलाइन, उसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है, राइट? और जो उसका हम्म, साउथ पोल है, वो अर्थ के, सॉरी, नॉर्थ पोल उसका साउथ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है। तो हम इनको ये भी बोलते हैं कि द जो पोल होते हैं मैग्नेट के, दे एक्चुअली नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं जो एक मैग्नेट के, जैसे कि ये हम्म, मैग्नेट है आपका, राइट? दिस इज योर बार मैग्नेट। ये अगर आप हवा में टांग दोगे तो ये घूम के इट विल अलाइन इटसेल्फ। हम्म, ओके, ऑब्वियसली इसके पीछे एक चौड़ाई है, ठीक है? ठीक है। तो इट विल अलाइन, द पोल्स विल हम्म, अलाइन देमसेल्व्स, they will align towards geographical, अर्थ जैसे अगर ये है तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, सो अर्थ का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल यहाँ पे है। हम्म, बट जो बार मैग्नेट है उल्टा होता है, अर्थ के अंदर जो होता है, हम्म, ये मैग्नेटिक साउथ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। सो देर आर टू पोल्स, वन इज अ जोग्राफिक पोल जो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, और दूसरा है साउथ पोल जो मैग्नेटिक पोल होता है, राइट? तो ये हम्म, जहाँ पे नॉर्थ जोग्राफिक नॉर्थ अमेरिका है, वहां पे एक्चुअली साउथ मैग्नेटिक पोल है। मीन्स अर्थ इज ट्रीटेड लाइक अ मैग्नेट, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर स्टडिंग। अर्थ का मैग्नेटिज्म हम सेपरेट पढ़ते हैं इसी चैप्टर में, बट जस्ट टू शो यू, तो ये जो बार मैग्नेट है, जब एक आप इसको हवा में टांगोगे, इट विल रोटेट एंड इट विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिज्म विच इज बीइंग गिवन बाय द अर्थ। तो जो नॉर्थ पोल होता है इसका, हम्म, बार मैग्नेट का, जो नॉर्थ की तरफ होता है, जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है, जोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ की तरफ जाता है, उसको हम बोलते हैं कि इट इज अ नॉर्थ सीकिंग पोल। हम्म, सो द दैट साइड ऑफ द, ये पोल्स हैं, ओके? नॉर्थ इज अ पोल, साउथ इज अ पोल। yes sir। सो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये पता होगा, छोटी क्लास है, मैं हाँ जूमिंग, yes राइट? sir। हम्म, So if you leave it, it will show something called as a directive property. हम्म, Direction आ जाएगी उसमें, right? So yes sir। it will rotate, and one of the pole will go towards Earth's geographic north, and the other pole will go towards Earth's um, geographic south, जो नीचे है। So नीचे हम्म, geographic south है। yes।
तो हम जो नॉर्थ पोल की तरफ उसका पोल चला जाता है उसको बोलते हैं इट इज अ नॉर्थ सीकिंग पोल। एक ऐसा मैग्नेट का पोल जो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ को सीक कर रहा है, ढूंढ रहा है। ठीक है। मैग्नेट का वो वाला पोल जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। मैग्नेट का वो पोल जो अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ की ओर अलाइन हो जाता है। यहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ है मान लो अर्थ का, तो हम बोलेंगे कि अर्थ का ज्योग्राफिक पोल है। और ये जो है बार मैग्नेट, ये इस तरफ हो गया। तो ये बार मैग्नेट का जो पोल है इट इज सीकिंग व्हाट, इट इज सीकिंग द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। सो वी विल से इट्स अ साउथ सीकिंग पोल। ठीक है। साउथ सीकिंग नाम रखे हुए हैं मैग्नेट के पोल के। एक तो स्ट्रेट अवे हम नॉर्थ और साउथ भी बोल सकते हैं, दूसरा हम इसे ये भी नाम देते हैं। अगर ठीक है। इट इज सीकिंग मतलब किसको ढूंढ रहा है, सो टू से। सीकिंग का मतलब है ढूंढना, सर्च करना, राइट। तो आप यस सर। सीक कर रहे हो और सीकर खोज में हो। तो जो मैग्नेट का पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ जाता है हम उसको बोलते हैं इट्स अ नॉर्थ सीकिंग पोल। ठीक है। साउथ सीकिंग पोल। So these are the two ends of a bar magnet. हम्म। Let me show you the why Earth is also having a like a bar magnet, because उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, यस वैसे सर। तो हम अलग से पढ़ेंगे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट आई वाज रेफरिंग टू। लुक एट दिस डायग्राम। So if you look into this diagram, what you see is, so ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, बट जो अंदर मैग्नेट है वो साउथ है। हम्म। तो इसीलिए जो हमारा बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है। लाइक अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। करेक्ट। नॉर्थ पोल विल गेट अट्रैक्ट, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल will get attracted towards the south pole of earth, and the south pole of the bar magnet will get attracted towards the north pole of the earth's bar magnet। अर्थ के अंदर भी एक बार मैग्नेट ट्रीट करा गया। तो इसीलिए अब होता क्या है कि यूज तो जैसे कंपस होती है, कंपस को जो होता है हम ज्योग्राफी के लिए यूज करते हैं ज्यादा। तो कंपस को हम बोलेंगे कि कंपस का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट होके उस तरफ चला जाएगा। उस पर लिखा होता है कंपस में नॉर्थ एंड साउथ। यस सर। तो जिस तरफ भी नॉर्थ घूमा तो हमें मालूम है कि वहां पे साउथ पोल जो है मैग्नेट का तो है अर्थ के, लेकिन ज्योग्राफिकली तो वो नॉर्थ अमेरिका ही होगा ना, यस नॉर्थ सर। साइड। दैट इज व्हाई वी से कि इट इज नॉर्थ सीकिंग, इट इज नॉर्थ सीकिंग, इट इज सीकिंग द ज्योग्राफिक नॉर्थ। The north pole of a bar magnet seeks a geographic north of Earth. अंडरस्टूड। Right? So it's just a terminology which is being used to explain things. Nothing more than that. है नहीं उसके अंदर। तो so मैग्नेटिक पोल की डेफिनेशन क्या होती है? So if you can find on a bar magnet a location from where the magnetic field can be detected to be exiting or entering, you will say it's a case of it's a place of pole। तो जो नॉर्थ पोल होता है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट करता है। यू कैन सी अर्थ के केस में, राइट, इट इज एग्जिटिंग फ्रॉम हियर, यस। लेकिन यू कैन सी इट इज एंटरिंग हियर। गॉट इट? यस सर।
So the location of the bar magnet where you find exit and entry happening are the poles of the bar magnet. तो exit and entry याद रखना है आपको. ठीक है. Okay. Also remember that unlike charges, the poles of a bar magnet or a magnet, any magnet, will only occur as a dipole. You can have a plus q and a minus q as a separate existing charges. But you cannot have a north pole and south pole to be existing independently. You cannot have only north pole with you. If you have something, you will always have both. You will have both south pole and north pole. So they exist as a dipole. Okay, इनकी existence as a dipole है. Both north and south will exist. Make sense? Yes, sir. Okay, so magnetic poles never occur in isolation. They always occur as dipoles. All right, so or in pairs we can say, right? So they occur in north-south pair. Okay. So a dipole is what? It's a dipole is what situation? So dipole is a situation which you are seeing, and you're saying that there is a magnetic pole on one end, and then there is a magnetic pole on the other end also, but they're equal and opposite. दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो बराबर होती है. जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं उतनी टर्मिनेट कर रही हैं. तो बोथ आर इक्वल इन स्ट्रेंथ बट ऑपोजिट. ठीक है. सो डाइपोल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं दोनों एंड पे. व्हाट इज अ डाइपोल? अ डाइपोल इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मैग्नेटिक पोल ऑन ईदर साइड, बट द मैग्नेटिक poles are opposite in nature though equal in magnitude. ठीक है. Common sense भी है. Yes. What is a dipole? It's an object. It's an object that has both the poles lying on its opposite sides of equal magnitude but opposite nature. ठीक है. If you suspend a bar magnet, like I have suspended this, can I say that the north pole of the bar magnet will seek north pole of Earth? Yes. The geographic north की तरफ ही पॉइंट करता है नॉर्थ पोल, क्योंकि वहां पे एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ होता है अर्थ का. तो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो नॉर्थ पोल घूम के अर्थ के साउथ पोल के पास आ जाता है. तो नॉर्थ पोल फ्रीली सस्पेंड करने पे घूम के यहां आ जाएगा और ये इसी साइड पे अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा. ठीक है. ठीक है. Okay. Some very 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 basic type of knowledge. Okay, nothing great in this. Okay, let me. Yeah. Okay. So if you know north, जैसे कि आपका वो होता है कंपस. Right, if I keep a compass and I say, okay, so I draw okay, so this is my compass. So मान लो north, अर्थ के north, if you know where is the direction of north from the suspended compass, compass तो हाथ में ऐसे घूमती है ना, ऐसे रखते हैं. Yes, sir. कैन रोटेट, फ्रीली सस्पेंडेड ही होती है. ऐसे तो नहीं रख सकते ना, हाथ पे तो घूमेगा कैसे. तो फ्रीली सस्पेंड करना पड़ता है. तो बेसिकली आपको अगर एक डायरेक्शन मालूम चल गई कि नॉर्थ इस तरफ है, फिर तो आपको सभी कुछ मालूम चल गया. इफ नॉर्थ इज हियर देन द साउथ इज हियर, एंड देन द ईस्ट इज हियर, एंड देन द वेस्ट इज देयर. सो नाउ यू नो एवरीथिंग. दैट इज व्हाई यू समटाइम्स आल्सो यूज नॉर्थ पोल स्टार as your guiding star in the night. Ships do that. Yes, sir. North Pole. But anyway, that is more astronomy oriented. Now tell me, have you heard about what is the source of magnetism? Kabhi suna hai? It's a very difficult concept. And when we say origin, what we mean is
let's discuss the source of magnetism. Right? तो हम जब बात करते हैं source of magnetism की, तो we are actually going in the direction of very microscopic discussion कि अंदर atomic level पे क्या हो रहा है. Right? When we talk about source or origin of why some substances exhibit magnetic character. That is very important, right? To understand where is the origin at. Is something special which is happening inside, or what goes on to create this magnetism? Okay, so it's very difficult to, but basic थोड़ा बहुत बनाया गया है, और उसको बेसिकली यूज करा हमने जो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होती है ना, वैसे समझाया गया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेवल पे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. सो रिमेंबर दैट, if you remember that electrons are moving, okay, electrons are moving. A moving electron is like a current because it is dq by dt. I is equal to dq by dt. Yes, sir. And we know every current produces a magnetic field also. ये भी पढ़ा हमने, B की वैल्यू ड्यू टू I, है ना, मैग्नेटिक Yes, sir. इफेक्ट्स के अंदर. सो अगर इलेक्ट्रॉन भी हिलेगा तो क्या होगा? It is like saying that electron is moving is like current is there, and if current is there, then we can say magnetic field is there, right? And if magnetic field is there, then we say that the strength of that field will be known as the word called as magnetic moment. Yes, sir. राइट. सो बोर का जो केमिस्ट्री का मॉडल था, इफ यू रिमेंबर, केमिस्ट्री में बोर मॉडल भी पढ़ाया जाता है Atomic 11th की, model. जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इन प्रोटॉन and neutrons being at the center, and electrons are rotating. So you can see that the electrons are indeed revolving around the nucleus. Okay, so if I were to draw it, I will say, okay, sorry, how can it be a square? Okay, so this is your Bohr's orbit, and you have a situation like this. Electron is rotating continuously in the circle. Okay, let's say this is your electron and it is moving like this, right? ऐसे हिलता है continuously. Yes, sir. बोर के मॉडल के अंदर simplified theory, and you can have a situation where, so this is a nucleus, it has both these are neutrons, and say at the center, and you also have at the center maybe protons. Okay, maybe क्या होते ही हैं, they're always there, right? So these are, blue is proton, and you have the electron which is moving around these, right? And you know, moving electron is nothing but a current. And therefore, if you want to find out कि यार अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो एक फिजिक्स की क्वांटिटी होती है, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट. Yes. Magnetic movement. So when this electron is revolving in a circular orbit, it is associated with something called as magnetic moment, which actually tells you a lot about the origin of magnetism. कि कहीं ना कहीं अंदर तो कुछ magnetic हो रहा है. Yes. Okay, and remember that apart from the revolving electron which you see, right? You see this revolution of the electron happening, and I say moving electron means magnetic field. And how to measure the magnetic field? We will measure it with the help of a quantity called as a magnetic moment. Some scientists, क्या मतलब, if you remember, if you studied Off principle, 100 rules of maximum multiplicity and all that, you will find that an electron also has a spin. Yes, sir. Right? So electron has a spin also. So if we talk about electron spinning at that point, अब electron खुद भी अपने एक्सिस के, जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है और खुद भी घूमती है ऐसे ऐसे गोल गोल, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा होता, राइट?
Yes, तो sir. इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करता है साथ में अपने एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, दैट स्पिन, right, also Hmm. tells you the direction of the magnetic field. So you are interested in finding, okay, electron is moving and electron produces something called as magnetic moment that helps me measure the strength of the magnetic field, strength of magnetic field, but I also want to know the direction of the magnetic field which this revolving electron is. If you want to find the direction, then the direction generally comes from the spin of the electron. So look at the microscopic situation. Every element, everything has um, electron in it, right? And so those electrons are revolving around the nucleus as per Bohr, and they produce something called as a magnetic moment, which is a measure of magnetic field. We will come in detail what exactly is magnetic moment and all that. And then the electrons are also spinning. तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम बात करें, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, एनी मटेरियल इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? Hmm. टेल मी व्हिच मटेरियल इज डजंट हैव इलेक्ट्रॉन. Every material will have कोई electrons, नहीं right? है. हाँ. Now if every material has electrons, it will have a magnetic moment, and Hmm. electrons also have a spin. So therefore a magnetic field will also have a direction. But not all the materials are magnetic in nature, by the way. Hmm. They're not, Yes, right? sir. So something special has to happen, that you can say that the electrons, but ये समझ में आ गया कि there is something happening at a atomic level, Hmm. which is at the level of electron, जहाँ magnet material में है कहीं ना कहीं. Yes, sir. अब वो निकल के कैसे बाहर आएगा? How will it, manifest itself to you? Hmm. कि I am not a magnet, I am a magnet, so different types of material, paramagnetic material सुना होगा, diamagnetic Hmm. material, Yes, sir. हाँ. है ना? So वो मटेरियल बन के आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि किस में कितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक मूवमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट, have you heard about concept of paired and unpaired electrons? थोड़ा बहुत. सुना होगा. ओके. हाँ, सुना तो है. हाँ. ओके, सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, वो तो दे विल स्पिन एंड दे विल Hmm. ऑल्सो ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. ये तो बोर ने हमें बताई दिया था कि Hmm. स्पिनिंग एंड ऑर्बिटिंग आर गोइंग टू हैपन, Yes, राइट? sir. बट दो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, देर आर Hmm. टू इलेक्ट्रॉन्स कुछ एटम्स के अंदर. In some atoms you may see a pair of electron like this. So let me draw another electron here, and so this is another electron, okay? Hmm. So ये जो blue रंग का नजर आ रहा है, this is my second electron. Let me just bring it here, okay? But let me change the color of the electron to something else so that we don't have confusion on the electron. Okay, so this is the color, okay, of the electron. What color is the pairing? Able to make out this color? Second electron का क्या color आ रहा है? Red, blue और green. ये green है ना? Okay. हाँ. Yes. हाँ, I meant green. So I will just bring it to center, okay? ये मेरे proton और neutrons है. Now what will happen is, in some materials Hmm. in the nature, something special is found out with respect to the pair of electron which is orbiting and spinning. Hmm. Okay, and what is that? What they see is that the two electrons are orbiting. So one electron is moving like this, but the second electron is moving like this. So at one go, if you were to say how are they behaving, they are behaving in a manner that they are orbiting in a separate direction, clockwise and anti-clockwise. Obviously, they are not in the same orbit. ऊपर नीचे होते हैं एक दूसरे के. ये तो Yes, sir. टक्कर नहीं हो जाएगी इनके एक ही सर्कल में, Hmm. राइट? सो ये वाला सर्कल इस तरह से अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप देखोगे, सो द डायग्राम एग्जैक्टली इज दिस. So one electron is moving in clockwise, the other is moving in anti-clockwise, Anti-clockwise. and then of course the spin, एक की spin अगर ऐसी है तो दूसरे की spin की direction उल्टी है.
So they are Yes. not only orbiting in reverse order, their spins are also reversed. ठीक है? Yes. Now what happens because of this? It is found that the net magnetic moment of such atoms is zero. Yes, sir. So magnetic moments is seen to be zero in these cases. The electrons are orbiting. So the word is they are orbiting in opposite directions, and electrons are spinning also Yes, sir. in opposite. So both are opposite. So because of that, the magnetic moment of one cancels the other, and the net magnetic moment is found to be zero. Okay, I'm actually coming straight to the point of magnetism, although we will cover some theoretical concepts as we progress. छोटे छोटे concept हैं. I have straight away come to something crux, so to say. Okay, now the reason is because the magnetic field which got produced because of the individual magnetic moments got cancelled. ठीक है? तो ठीक है. दोनों ने मैग्नेटिक मूवमेंट अपना अपना करा, लेकिन वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी कैंसर हो गया. आई टोल्ड यू मैग्नेटिक मूवमेंट इज द वन दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द स्पिन डिसाइड्स द डायरेक्शन. अगर दोनों चीजें उल्टी हैं तो दोनों एक दूसरे को जो फील्ड पैदा करते हैं वो उल्टे पैदा करते हैं. स्पिन भी उल्टी है तो डायरेक्शन भी उल्टी है. Yes, sir. ऑर्बिटिंग भी उल्टी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा है साइन में, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आता है इस एटम के अंदर, जहां पे पेयरिंग के अंदर द तो हम बोलते हैं यार ये मटेरियल तो बड़ा सही है यार, ये मटेरियल जो है दिस मटेरियल इज शोइंग अस नो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट because of this spinning and orbiting in reverse direction. So such materials where you find that we call such materials to be diamagnetic materials. Wait, something. Okay. So we will call them not able to wait. Okay. Oh भाई board. I'm not able to write. See if you're able to write. लिखना जरा है. Yes, sir. हो रहा है. Yeah, you can. In my case, I've got. Let me just close the whiteboard and open it. Oh, कुछ आया. Lost. Okay. I don't know what is this, but कुछ तो बन गया. मुड़ गया. So I'm just opening it back, and I hope it is saved here. Okay. So such substances that exhibit zero magnetic moment are known as diamagnetic substances. Okay. ठीक है? ठीक है. Okay. Okay. Now the question is, so are there materials with unpaired electrons? Okay, so if you have paired electrons giving you zero magnetic field, then so we're talking about origin, कि कहाँ से अंदर पैदा होता है. ऐसे मटेरियल में जहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट ही प्रेजेंट नहीं है क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग और स्पिनिंग ऑपोजिट है, ऐसे मटेरियल बन गए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो विद द सेम लॉजिक व्हाट इज सेड इज दैट देयर कुड बी मटेरियल्स व्हिच आर having unpaired electrons. Great. Right?
सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो जी ये जो होंगे दे विल प्रोड्यूस, they will exhibit magnetic behavior. So the ones that exhibits unpaired electrons, having unpaired electrons and exhibiting magnetic behavior are categorized as paramagnetic, which are feebly attracted to magnets. ठीक है, these are feebly, तो खास अट्रैक्शन नहीं होती, थोड़ी सी दिखाते हैं. Now let's consider ferromagnetics. Ferromagnetic materials have a strong attraction for, very strong, strongly attracted to magnets. Okay, so you have a sense कि डाया में मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो. अभी हम फॉर्मूले सब पे आएंगे, बट हम अभी ना थ्योरेटिकली देख रहे हैं कुछ अंदर ऐसा क्या होता है कि मैग्नेट होता है किसी में और नहीं होता. Why do some materials exhibit a magnetic character, which means getting attracted by the magnet, and why some don't? Basic. Yes, sir. Okay. Before we go there, in detail, let's understand one more important concept associated with the concept of origin of magnetic field. अभी हम origin पे ही हैं, but हम थोड़ा सा हटके थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं. And the concept is called as the concept of magnetic domain. Okay. Okay. Very similar to what we have already discussed, but not exactly identical. So, एक मैग्नेटिक डोमेन क्या होता है कि एक ऐसा रीजन जहां पे जो इंडिविजुअल एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सारा ग्रुप्ड होता है और अलाइंड होता है. मैग्नेटिक डोमेन इज अ रीजन. ओके, लेट मी राइट इट. इट्स अ रीजन in which the magnetic field of atoms, हर एटम के अंदर अपना एक वो है न्यूक्लियस. उस एटम के अराउंड पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. हर एटम मतलब सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड है. Yes, sir. तो अगर एक हम रीजन ले लें जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम्स इज ग्रुप्ड एंड अलाइंड, ऐसे रीजन को बोलते हैं हम डोमेन. अच्छा, ठीक है. राइट, सो दे आर, हाउ आर दे शोन? दे आर शोन विद द हेल्प ऑफ अ एरो. जैसे आप देखो कि आयरन जैसे बहुत अच्छा अट्रैक्ट होता है. आयरन इज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट्स. बच्चे करते भी हैं आयरन को. Yes, sir. तो आयरन की अगर मैं बात करूंगा तो द कॉन्सेप्ट इज दैट द मैग्नेटिक डोमेन्स behave like individual small metal magnets, not metal, magnets. तो मतलब एक जो मैग्नेटिक डोमेन है, फॉर एग्जांपल आयरन है. अब आपको तो यू विल सी एज अ आयरन का पीस, राइट? दिस इज योर आयरन Yes, पीस. sir. बट एक्चुअली व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दिस. लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम आल्सो. कि डोमेन एक रीजन होगा जहां पे यू विल फाइंड द ग्रुपिंग ऑफ these magnetic fields associated with a small, let me just tell you the diagram. It is there in NCERT also, but I think it's बहुत आगे है जाके वो जो NCERT के अंदर है, क्योंकि ये वाला पार्ट theoretical है. So I've just, generally it is taught quite late in the topic. मुझे लगता है it should be taught first so that you have clarity on where is the magnetism coming from and all that, and then you can go to the other topics associated with I think इसमें, yes, yeah. So if you see, so this is the way it is shown. So so ये ग्रुप देखो, ये वाला एरो से दिखाते हैं डोमेन को.
सब में ऐसा बनाना है आपको. They can have different directions, okay? But that means the alignment is alike in a particular region. So ये एक region है, हम्म ये एक अलग region है. इसमें alignment देखो ये है, ये अलग region है. हम्म Okay, so ये जो arrow है, it is a domain. Sorry, this is a miniature magnet. और ये पूरा रीजन है, और ये छोटे 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 हैं, ये डोमेन है. डोमेन इज अ region, and this lines which are drawn inside the domain represent the miniature bar magnets. हम्म ये छोटे छोटे ये बार मैग्नेट्स हैं इसके अंदर. ओके. एंड तो जब आप ऐसे रब करते हो ना एक मेटल को मैग्नेट के साथ, और बोलते हो लुक ये मेटल भी आयरन अब जो है वो बन गया है, मैग्नेटाइज हो गया है. यस सर. आयरन को अगर ऐसे से करो तो बन जाता है ना वो मैग्नेटी. हाँ. तो उसके जो आयरन के अंदर जो ये फॉर एग्जांपल दिस इज योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. Okay. what you will see is if you rub it with a magnet, all the domains will get aligned in the same direction. But थोड़ी देर के बाद you will see it's gone. हम्म ठीक है. So this property, is coming from. So the first concept is at a microscopic level, electron pairing and unpairing decides. Pairing का मतलब है अगर सब कुछ paired है, तो you will not see any magnetism because it will be a paramagnetic material, because the net magnetic moment is zero, and you won't see anything because of cancellation. But if you see that you have iron, for example, right? Iron is and it has billions of atoms in it, obviously, and then these are arranged in a domain structure. Within a domain, all the arrows which are mini magnets are in the same direction, parallel to each other, and the moment they are brought in contact with a bar magnet so initially you can see the direction is very random. Okay, so this is different from this is different, this is different, this is different. This could be like this. हम्म So the ferromagnetic material is divided into individual domains having different direction of the miniature magnets. But the moment you rub it, all of these will get organized in one direction. ये सारे एरो जो हैं घूम के एक साइड पे आ जाएंगे. ओह अच्छा. तो डोमेन में you will see everything very identical. Every domain, the arrow will be pointing in the same direction. ठीक है. बट फेरोमैग्नेटिक को वैसे अगर देखोगे, अगर रैंडम है, तो फिर इतना ज्यादा मैग्नेटाइज्ड है नहीं. वो तो आपने उसको अगर जब आयरन से तब करा, तब वो एक्चुअल अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको दिखाएगा. हम्म रैंडमनेस अगर होगी तो इट मे नॉट बी एग्जिबिट too much magnetic field. But the moment you have a rubbing effect and all the domains coming in the same direction, the magnetic field inside the ferromagnetic material will show its presence because it has also become a magnet. दूसरों को अट्रैक्ट कर लेगा ये. फिर इसके सामने एक छोटी सी पिन रखोगे, तो पिन को खींच लेगा लोहे का टुकड़ा, क्योंकि वो मैग्नेट बन गया ना. लेकिन Yes, sir. if you see a ordinary piece of iron, have you ever seen an ordinary piece of iron attracting another iron? No, नहीं. because उसमें the domains are randomly distributed. Yes sir. How can random distribution create any magnetism? It does not. So Hmm. even though the material is unpaired electron, even though it is very nicely, electron perspective, very nice, it has a net magnetic moment, but because the magnetic moments are localized in individual domains and are random in direction, the impact is not visible. बोल सकता है ना बंदा, फिर फेरोमैग्नेटिक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो फिर दिखाना चाहिए इनको अपना कैरेक्टर. व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक डल, लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स? द रीजन इज कि भाई फेरोमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट उसके बावजूद भी देयर इज अ प्रॉब्लम दैट द डोमेन्स
When these atoms come together individually, they start creating domains. They group and align in one direction. And there are multiple domains inside an iron piece. And therefore, they cancel out each other. तो वहां पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैंसलेशन थी. यहाँ लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ लेकिन डोमेन बन गए. डोमेन्स ने सब एक दूसरे को कैंसिल कर लिया और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बना दिया. So therefore, ferromagnetic materials, if an ordinary piece of iron is there, it is not a magnet. Only when you rub it with another magnet, it becomes a magnet, because एक एफर्ट और करना पड़ता है कुदरत के अलावा. कुदरत ने तो इसको बनाया कि तू तू तेरे को मैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन you have to rub it with some ना to align all these miniature magnets in the same direction in each of the domain. It's a region. Domain is a region. Yes sir. छोटे छोटे ये रीजन्स हैं जो मैंने टेढ़े तिरछे. मॉडर्न आर्ट ज्यादा लग रही है. क्लियर? ओके. थ्योरेटिकल है ये चैप्टर, एक्चुअली बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है. हाँ वो तो. Okay, and so therefore we will have to. Okay. Okay, so now we understand that. So the moment you will, do this piece is rubbed with a magnetic material, and these small domains. Okay, so these small domains. मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ identical. Hopefully बन जाएगा तो बन गया. So once it is magnetized, you will see something like this. अलाइन हो गए सारे एक डायरेक्शन में. हाँ हो गए. And now the magnetic field makes an appearance. Entry and exit points get created. Yes sir. This is ferromagnetic material which was magnetized. ठीक है? ठीक है. So there is a science in physics and engineering which only deals with this magnetism. We don't need to do that anyway, but होती है. तो पूरी की पूरी जो है it is focused on the concept of these materials only. बहुत important होते हैं. Daily use के अंदर these are used in various applications. Okay, so okay, so let's talk about. Okay, we don't need to study this right now. We can study it later. Okay. So we are actually, what we are studying is the second part of this chapter, not the first. Okay. Okay. Now let's talk about materials specifically. The diamagnetic material, paramagnetic. कई बार क्वेश्चन आता है रटा रटाया बोर्ड में. Give the three differences between diamagnetic, paramagnetic and ferro. तो चार्ट बनाना होता है और इसमें लिखना होता है ये. ठीक है? All right. So let's say if you keep a material in a magnetic field. अब आप ध्यान रखें एक material है. So pick up a material, and so you have a material piece with you. So this is your material, and this material is now being kept in magnetic field. What we are studying is paramagnetic material, डाया वीकली अट्रैक्टेड, फेरो जो बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है. डायामैग्नेटिक, फेरो, तीन टाइप के मटेरियल्स पाए जाते हैं. मटेरियल इट इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक मटेरियल लिया, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. ओके, सो व्हाट वी सी इज दैट द जो ये मटेरियल है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है they get impacted. So the moment you keep the material in a magnetic field, the electrons of the material get impacted. ठीक है? ठीक है. All right. So each material is going to react differently to the external magnetic field. अब रिएक्शन तो होने वाला है मटेरियल का. For example, your material A, which is
paramagnetic, you have another material which is dia, and the third material which is ferro. Okay, so this is para, this is dia, and this is ferro. F लिख दिया मैंने, ठीक है? ठीक है. Ferro. So you keep them in an external magnetic field individually. So electrons will be impacted inside these materials because of the presence of an external magnetic field. So this effect is known as Faraday's law of magnetic induction. Okay, the electrons which are getting impacted in the material because of an external magnetic field. So this is induction ही होगी, जैसे कि वो EMI में पढ़ा था हमने, Faraday's law of EMI. So this is Faraday law of magnetic induction. वो थी electromagnetic induction. Induction. Lenz's law or all that, right? Yes, sir. Okay. So if we talk about the magnetic moments, because finally देखो atomic level पे अगर electrons are getting impacted, okay, how will you decide that what type of reaction is coming, right? So finally it will boil down to magnetic moment only. ठीक है? So magnetic moment जो है वो बहुत important होता है finally. और तो magnetic moment आता कहाँ से, हमने तो एक देख ही लिया. दो फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, if you remember, magnetic moment के. Okay, one was, if you remember, so now we are waiting for the material to react to the external field. And we know कि okay, पहले तो जब हमने ऊपर पढ़ा तो हमने कभी external magnetic field का नाम भी नहीं लिया. What we said is that the origin is because of what? Because of orbiting. Yes, sir. And because of spinning. Now these two create what is called as a magnetic moment. And that's all. And this magnetic moment results in magnetic field. ये हमने पढ़ा. But now remember that there is another third quantity I'm introducing and saying the magnetic field is now getting created, okay, by one more thing. Whether the material, how will the material get impacted is also dependent on electron motion, orbiting. It is dependent on spin. There's another factor which will decide the reaction of the material, which is there's another factor that decides the magnetic moment of the material, which is a lot of materials are exposed to external magnetic field. So if somebody says what are the three factors that decide the magnetic moment, the third factor is the exposure to external magnetic field. अगर इनसे मैग्नेटिक मूवमेंट डिसाइड होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड होता है, तो एक्सपोजर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी एक फैक्टर हो गया जो डिसाइड करेगा what will happen to this material, how will it behave, will it stay ferro, will it stay para, will it stay dia, क्या बनेगा ये. अभी तक हमने डिसाइड करा था पेयरिंग हो जाए अगर इन दोनों की वजह से, और ऑर्बिटिंग उल्टी हो और स्पिनिंग उल्टी हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल. बना दिया ना हमने मटेरियल, मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो कर दिया. लेकिन reality is that there is another factor that decides what type of material will be created. That is dependent on when the material is exposed to an external magnetic field. Let us see the impact of the external magnetic field on the material. ठीक है? Okay. Yes, sir. तो okay, so diamagnetic material, okay, let's say we talk, I'm going to the next page now, okay. ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है, थोड़ा बीच बीच में न्यूमेरिकल आएगा, काफी मेमोराइजेशन ओरिएंटेड है, बट समझ आ जाएगा. तो सॉरी, वी वांट टू स्टडी व्हिच वन, डायमैग्नेटिक, ओके. सो वीकली अट्रैक्टेड, राइट. सो diamagnetic material. So diamagnetic material, what are the
characteristics, if you keep it in an external magnetic field, it is very weak and not susceptible to it is weak and negative susceptibility to susceptibility to external magnetic field. कोई खास असर नहीं होता इसको. Yes, sir. You may be susceptible to infections, right? When you go out, for example, you go to a gym, you may be susceptible, matlab influence. You may get affected by, right? So diamagnetic materials are not matlab really impacted. If at all they are, then they get repelled by the magnets. Attraction तो बहुत दूर की बात है. They exhibit something called as a repulsion, slightly. Slight repulsion is there. Yes, sir. ये यही आते हैं क्वेश्चन. 3 डिफरेंसेस. तो ठीक है जी, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लिखा था वीक हो गया, वीक और नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक की बड़ी स्ट्रांग और पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी है. वो फटाफट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सारे डोमेन ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और एक स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है. ओके, एंड दे आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली. कोई खास रिपल्शन नहीं होती. ओके, एंड diamagnetic movement material पहले ही हमने बता दिया, they exhibit the paired electrons that results in a zero magnetic moment. This we already know, by the way. Yes, sir. Zero magnetic moment, right? And yeah, so there is no so how does a diamagnetic property come into play? Because when you have the material which is placed in an external magnetic field, and you see it is getting feebly repelled by the magnet. Do you know the examples of diamagnetic materials? Copper. Yes, sir. Silver. Gold. All are diamagnetic material. Okay, and these are so if you go to the periodic table, there are a lot of diamagnetic materials available. The thing is, जो diamagnetic की properties है वो कहाँ से आती हैं? जो इनका इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है ना अंदर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, जो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 देते हैं, that gets realigned. So the path of the path of electrons, the path of electrons in a diamagnetic material gets realigned in presence of an external magnetic field. Okay, you don't need to go in more detail than this. Okay, मतलब बोल सकते हैं ना क्या वो कौन सा कैसे realign होता है? Not required, not in our course. Let's go to paramagnetic. So what you're preparing now is a 2 marker. Give the difference between this, give this. मतलब total memory पहले भी पढ़ा होगा, I'm sure. पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज, और भी प्रॉपर्टीज हैं, हम बेसिक पढ़ रहे हैं. पैरामैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट ये जनरल नॉलेज है, ज्यादा कमी है इसके अंदर वो. ओके, सो दीज हैव अ स्मॉल एंड पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी. Okay. स्मॉल, व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी, वी विल कम टू दैट. एग्जैक्टली. कहने का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कोई खास नहीं हो पाता, बट पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा मैग्नेट बन जाते हैं. वो तो रिपेल हो रहे थे ऊपर वाले तो. Yes, sir. Right. इसकी भी स्मॉल है, बट ये पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी दिखाता है. ठीक है. So they are slightly and as soon as you will remove the external field, they will lose their paramagnetic material property. छूट खत्म हो जाएगी.
अच्छा, Okay, and why the property exists we already know, because of the unpaired electrons. डबल पेडल। कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेयर में नहीं होते हैं, तो उनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट अपीयर हो जाता है। बहुत सारे कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है नहीं होते हैं। तो जैसे ही आप इन इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स को, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम है, जैसे मैग्नीशियम, लिथियम एंड टेंटलम, ओके, हम्म, मैग्नीशियम मेरे ख्याल से इजी है याद रखना, लिथियम भी इजी है याद रखना, लिथियम की बैटरीज बनने लग गई हैं। यस सर। और लिथियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ओके, सो मोलिब्डेनम, ये सब जो है दीज आर पैरामैग्नेटिक, एंड under the influence of the external magnetic field, again they also have the realignment of electron path। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है एक्सटर्नल हम्म, प्रेजेंस में। ओके, ओके। लेट्स टॉक अबाउट, सो बेसिक डिफरेंस इनके अंदर आएगा यही वाला कि एक्सटर्नल, अभी हम जो पढ़ रहे हैं सारा, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है वही बताने की कोशिश हो रही है। ओके, नथिंग मोर देन दैट। सो यस। it has weak and negative susceptibility, it has small and positive susceptibility। एक्सटर्नल फील्ड में रखने से इनका पाथ रीअलाइन हो जाता है, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैं पहले ही पता था, हम्म, और वही दोबारा रिपीट है। तो ये वाला फैक्टर जो है विच गिव्स राइज टू मैग्नेटिज्म, ये तो हमें पहले से ही पता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, ये भी हमें पहले से ही पता था। यस। दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिसाइडिंग द नेचर। हम्म, Okay, and let's talk about the ferromagnetic materials। Ferromagnetic materials, okay? Ferromagnetic material will show large and positive susceptibility to external magnetic field। अगर आपको पहचानना है कि मटेरियल किस तरह का है, आपको इसके हम्म, इलेक्ट्रॉन तो देखने नहीं जाओगे। यस सर। What will you do? You will say, I'm going to place all these three in an external magnetic field. यस सर। Based on how they exhibit behavior, I will tell you which material is this. हम्म, Okay, so if you keep them in an external magnetic field, if you keep a ferromagnetic material in an external magnetic field, it will show large and positive. I'll just tell you what is susceptibility, don't worry. Okay, ओके। so and we know that once you rub the ferromagnetic material with the help of an external magnet and take away the permanent magnet, तो ये भी magnetic बना रह जाएगा। हम्म, So if you remove the magnet away from that ferromagnetic material, the ferromagnetic material will retain its magnetism। मटेरियल सारे खाली आते हैं, उनमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता। जब उनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डोमेन की रीअलाइनमेंट होती है सारे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमेन सारे एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक में नहीं हो पाते ज्यादा डोमेन से एक डायरेक्शन में। तो जो डोमेन थ्योरी है मैग्नेटिज्म की, डोमेन थ्योरी बोलते हैं उसको, यस वो सर। तीनों पे लागू होती है। मैंने फेरोमैग्नेटिक में बताई थी, लेकिन पैरा में भी डोमेन होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, वो रैंडम ही रहते हैं। और अच्छा। डाया में तो बिल्कुल ही रिपेल वाला केस है, उल्टे हो जाते हैं हाँ, डायरेक्शन में। फेरो में अगर ऐसे हैं तो डाया में उल्टे, और उल्टे होते। फीबल अट्रैक्शन के केस के अंदर थोड़े से डोमेन एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म नजर आ जाता है। मटेरियल हमेशा कोरे होते हैं, माने दे हैव नो मैग्नेटिज्म इन देम, ओनली व्हेन दे आर subjected to magnetism of external magnetic field they will demonstrate who they are। हम्म, ठीक है, ठीक है। अपने आप में ऐसे नहीं है कि लोहा पड़ा तो वो मैग्नेट होगा। वो लोहा जब मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज होगा, हाँ, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अच्छा। वो हमारी थ्योरी है हम्म, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में होते हैं तो फिर वो डोमेन बना लेते हैं, तो डोमेन रैंडम होते हैं, फिर भी रिजल्ट जीरो आ जाता है फेरोमैग्नेटिक में। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ये रबिंग जो है ये क्या है? दिस इज एक्सपोजर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। यस ये सर। मैग्नेट क्या दे सकता है इसको? रबिंग थोड़ा ना दे रहा है, हम्म, कुछ ऐसी ताकत दे रहा है जो इसके डोमेन्स को सीधा कर देती है, इसके मिनिएचर मैग्नेट्स को एक ही डायरेक्शन में ले आती है। ठीक है। तो डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म बोलते हैं, वो जो डोमेन की
जो लिंक सीधा सीधा करना है, इट्स कॉल्ड डोमेन थ्योरी, हम्म, right? And remember that the number of domains is not one or two domains. You have like billions of atoms अच्छा, in a piece. So and then the movement you're creating, the magnetic movement you're creating is very high in these ferromagnetic materials. क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए ना इनके अंदर, यस सर, चाहे वो पड़ा इधर उधर होगा रैंडमली, लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, माने व्हेन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की दो स्टेट है, एक सबकी दो ही स्टेट है, एक स्टेट है अनमैग्नेटाइज्ड यस सर, जहां पे डोमेन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ रैंडम फैशन, दूसरी स्टेट क्या है, मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड स्टेट का मतलब है यू हैव एक्सपोज द मटेरियल टू द external magnetic field and you have aligned all the domains to produce a strong magnetic field within that material. Iron, nickel, cobalt. Iron, निकल को गए। निकल, कोबाल्ट खुद तैयार बैठे होते हैं, आओ कोई आए तो सही हमें मैग्नेटाइज करने के लिए, एंड वी विल बिकम मैग्नेट्स. So remember, when we study materials, no material is magnetized by birth. It has something inside it which is ready to become a magnet or not become a magnet. And how do you explain it? भैया इसमें डोमेन होते होंगे, वो डोमेन अभी रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर वो ऐसे कर दें तो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे ना, स्टफ लाइक दैट. यस सर, ठीक है. सो विच मटेरियल इज रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, मेमोरी से बताओ. डाया. अच्छा ठीक है ठीक है। ये भी ऐसे पूछते हैं. विच मटेरियल डू नॉट रिटेन एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वंस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड. पैरा. पैरा, फेरो तो रिटेन करते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं. हाँ, This effect of a material being placed within the magnetic field, external magnetic field, and then the magnetic forces of the material's electrons getting impacted. What is this law known as? लो, Faraday's law of magnetic मैग्नेट, induction. हमारे कोर्स में भी नहीं है. You don't have to worry about it, right? ठीक है। Okay. Let's come to this. क्योंकि हम अभी सिर्फ मटेरियल बेस है, बड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है. Okay, so let's study the concept of susceptibility. Magnetic susceptibility of ये weak का क्या मतलब होता है भाई? कहने का मतलब susceptible नहीं है यार, मतलब मेरे को इन्फेक्शन नहीं होता, दूसरे को जब खांसी होती है तो आई एम नॉट Yes, sir. susceptible ना, आई एम वीकली susceptible, बट आई एम स्ट्रांगली susceptible. दूसरे का असर हो जाता है मेरे पे. तो पैरामैग्नेटिक पे तो कोई असर नहीं हो रहा, यस सर, डाया पे थोड़ा सा असर हो रहा है, और फेरो पे तो बहुत असर हो जाता है, वो खुद ही मैग्नेट बन जाता है. हम्म, This is the susceptibility, being susceptible to external magnetic field. ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है भाई मैं बन जाऊंगा, हम्म, बट जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली पीपल विल कम बैक एंड से यार वो तो ठीक है, बट कैन यू टेल अस सम फॉर्मूलाज आल्सो विद दिस, हाउ डू आई मेजर इट, व्हाट्स अ स्केल, कोई रेशियो तो नहीं है, स्टफ लाइक दी क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना फिर. हाँ, ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर द okay, we are studying magnetic material, sorry. Infection के examples, I'm sure you've understood what I'm trying to convey. यस सर, Okay, it's a property of the material which it demonstrates in the presence of external field. हम्म, Okay, now how do you memorize this? Let me just tell you. क्योंकि अभी हम बाकी क्वांटिटी, जैसे यू डोंट नो स्टिल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है ठीक से, यस, यू नो कुछ है, हाँ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ ऑर्बिट और स्पिनिंग से कुछ बनता है, कुछ हम्म, सर्कुलर इलेक्ट्रॉन इज रोटेट कुछ, लेकिन एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला पे भी नहीं मुझे मालूम है, राइट? बट देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज देयर, विच जो जन्म देता है मैग्नेटिक फील्ड को, एटलीस्ट रेडी तो कर ही देता है. बाकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने आके काम बताना है कि क्या होगा, तैयारी तो अंदर से ही होती है. हाँ, तो अगर हम बात करें ससेप्टेबिलिटी की, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल in the magnetic field and the magnetic field intensity.
तो जितना अपने मैग्नेटाइजेशन हुई मटेरियल की, ससेप्टेबिलिटी का पहले तो साइन बड़ा वियर्ड है, ये साइन होता है। एंड हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड? इट इज गिवन बाय द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेट विच इज यूज टू मैग्नेटाइज इट। मैं कितना मैग्नेटाइज हुआ, मुझे कितना इन्फेक्शन हुआ, मतलब मैं कितना मैग्नेटाइज हुआ, हम्म, ठीक है। और किसने करा? किसी स्ट्रेंथ ने करा, कोई मैग्नेट यस। आया उसने मुझे आके करा मैग्नेटाइज। हाँ। ये वो मैग्नेटाइजिंग की ताकत है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंट। इंटेंसिटी। ठीक है, सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेट यूज्ड। कितना ताकतवर मैग्नेट यूज करा आपने दूसरे को मैग्नेटाइज करने के लिए, ये मैग्नेटाइजेशन है। सो ओके। मैग्नेटाइजेशन divided by intensity of the external magnetic field will give you the uh, susceptibility. So the measure of susceptibility is this ratio. ठीक है, ठीक है। अच्छा measure भाई, नापना भी तो है ना। यस सर। तो जो चीज मैग्नेटाइज हो रही है, कितना मैग्नेट बन गई, वो ऊपर लिख दी। इसके यूनिट्स बताता हूं मैं अभी। और ये इंटेंसिटी है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने जो ताकत लगाई, ताकतवर है तो बहुत ज्यादा कर देगा। अब हाउ विल द बिहेवियर शो अप? वी ऑलरेडी नो द बिहेवियर। First behavior is, say, diamagnetic. Sorry, the spelling should be diamagnetic behavior, right? So diamagnetic के अंदर, if you remember, the susceptibility was uh, repulsion थी. हम्म, So it is this, the weak and हमने क्या वर्ड यूज करा था इसके लिए? weak and negative susceptibility. So do you see the -1? यस सर। This is the range of susceptibility of a diamagnetic material. I hope I'm right. मैं एक बार दोबारा देखता हूं ऊपर। Yes, diamagnetic material, right? हम्म, कोई असर रिपेल करता है उल्टा, तो नेगेटिव है, नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी। ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिक नाउ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ना, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज फीबल, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जा, मैग्नेट से थोड़ा सा रब करोगे मैग्नेट तो थोड़ा सा मैग्नेट बन जाता है। डोमेन सारे तो नहीं ऑर्गेनाइज हो पाते, काफी सारे रैंडम ही रह जाते, लेकिन थोड़े बहुत जो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा मैग्नेट बन जाता है वो। तो स्मॉल एंड पॉजिटिव, अच्छा। ठीक है, ठीक है। इक्वल टू 1 भी इसी में इंक्लूड करना है। ओके। Anything which will show you a susceptibility which is greater than equal to 1 will be categorized as ferromagnetic material. ठीक है? ठीक है। So there are other scales also available which are used for deciding the nature of the material, but हमारे लिए जो scale है कि कितना वो बन गया, I think this is more than enough in our syllabus. ओके। इससे ज्यादा समझने की मुझे नहीं, मतलब we don't need to do anything beyond this. ठीक है। Okay, so what I will do now is we will continue to have these discussions again continuously for the week अच्छा। till we ओके। complete this chapter. Hopefully, what day is it today? Wednesday, right? यस So सर। we will try and complete this by next Tuesday, including practice भी करेंगे हम, क्योंकि exemplar और NCERT से और पुराने CBSE के क्वेश्चन की। हम्म, ठीक है, so hopefully we will be done with this chapter within this week, मतलब next 7 days में हो जाएगा। ओके। Right, just go through NCERT, read what I've told you. I will come gradually to magnetic movement क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे लगता है मटेरियल थोड़ा मेमोरी ओरिएंटेड है, बेटर है कि इसको पहले कर लिया जाए।
ठीक But है। next time I will tell you what is a magnetic moment, what is this. But I don't want to waste time on telling you South Pole, North Pole, which I find pretty, हाँ वो तो है। time wastage है. बता रहे हैं जी साउथ होता है, अट्रैक्ट करते हैं दो मैग्नेट. वो Everybody सबको knows पता that, right? So I want to cover the properties, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है. जो है। हाँ प्रॉपर्टी और जो बार मैग्नेट है, तो हम पढ़ते कैसे हैं? बार मैग्नेट पढ़ते हैं, मटेरियल पढ़ते हैं, फिर अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं. एक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्या उसके फॉर्मूले पढ़ते हैं, क्योंकि इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ डाइपोल. इट्स अ डाइपोल. बट यस सो डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड कितना है परपेंडिकुलर एक्सिस पे, इक्वेटर पे, वो निकालना होता है. फिर मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ लिया हमने, वो थियोरेटिकल है, मेमोरी बेस्ड है काफी. कुछ फॉर्मूलेज हैं छोटे छोटे, ससेप्टेबिलिटी क्या होती है. और फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं अर्थ का जो बार मैग्नेट है बड़े वाला, उसके बारे में. वो हमारे किस काम आता है, उसमें क्या नापा जाता है, एंगल ऑफ डिप होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, क्या किस लिए यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. तो चैप्टर ब्रॉडली इज, इफ यू सी, यू स्टडी अबाउट अ बार मैग्नेट. ओके. बट बेटर रहता है कि आपको पहले पता हो कि मैग्नेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता हो. सीधा बार मैग्नेट पढ़ तो सकते हैं, बट वो बार मैग्नेट मैग्नेट क्यों है, वो मटेरियल की वजह से होता है. सो द मटेरियल प्रॉपर्टीज विच आर पैरा, डाया, फेरो, वो पता होनी चाहिए पहले. फिर देन यू कैन स्टडी बार मैग्नेट, एंड मे बी यू कैन स्टडी Earth's magnetic field after that. ठीक है। And Earth is also a big bar magnet we have seen in the diagram. तो बहुत टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर. It's a short chapter यस and hopefully we will be able to. मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम बता दिया, बट हो सकता है कम टाइम में खत्म हो जाए ये चैप्टर. प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लग सकता है. ठीक है। और कुछ है नहीं इसके अंदर. बार मैग्नेट, materials, and Earth's magnetic field, and this chapter finishes. ठीक है। A lot of students leave this because it's a very abstract topic, क्योंकि कोई भी थ्योरी अपने आप में कंप्लीट नहीं है. There is no completion, as in there is more explanation but it is not explained. यस ठीक है. तो we will have to stop there. We can't go inside the details of pairing of electrons too much. Orbiting and spinning word काफी है. और why they, for example, materials exhibit change in their behavior when exposed to the magnetic field, because the path of the electron gets realigned in the presence of a magnetic field. अब realignment की क्या होती है, क्या वो circular motion जो है वो elliptical बन जाता है, वो कुछ और बन जाता है? Not our syllabus. We don't have to worry about it. We just need to remember something happens when a material is kept inside an external magnetic field, and the realignment of the electron path happens under the influence of the external magnetic field, and that gives rise to this behavior of dia, para, and all that. ठीक है। ठीक है. Let's meet tomorrow. Hopefully you will still better tomorrow. इतना आज के लिए बहुत है. ये सब है ना. कोई फायदा नहीं है. हाँ। So one topic will start, वो पूरा हो नहीं पाएगा.